आइए अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की दैट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट फॉर blotting a purpose. That slide shows you the required equipment. The important sponges are available here, which are shown in this black color here. One of the sponge is going to be on each side of this blotting cassette, and sometimes in order to maintain the temperature, to avoid excessive heating, we may need to have this cooling box available. Right after electrophoresis, we can take the gel towards electroblotting. यहाँ पे एक दफ़ा फिर जिक्र करना ज़रूरी है कि electroblotting के लिए stained gel यूज़ नहीं की जा सकती और इस प्रोसेस को electroblotting प्रोसेस को बहुत एहतियात से प्रोसीड करना होता है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे जो सेल्फ कंटेमिनेशन है, हमारे हाथों पे जो केराटिन प्रोटीन है वो जेल के साथ या वो हमारी जो मेम्ब्रेन है नायलॉन मेम्ब्रेन उसको कंटेमिनेट ना कर दे। सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंटेमिनेशन थ्रू आउट द प्रोसेस वी नीड टू यूज द ग्लव्स। So the first step is going to be take the gel and equilibrate it in the transfer buffer for 15 minutes. जब जेल सेपरेट करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उस जेल को ट्रांसफ़र बफर में शिफ्ट कर दीजिए 15 मिनट के लिए एट रूम टेम्परेचर। इसी टाइम के दौरान एग्जैक्टली जेल की डायमेंशन के अकॉर्डिंगली वी नीड टू कट डाउन दी नायलॉन मेम्ब्रेन एंड वी नीड टू प्लेस इट इन दी ट्रांसफ़र बफर। और जेल के अलावा मेम्ब्रेन की इक्विलिब्रेशन ज़रूरी है एंड here we need to be careful that there should not be any air bubble in between the transfer buffer and the gel. Therefore, it is recommended that take the gel and dip it at an angle of 45 in the buffer and then gradually and slowly release this membrane, nylon membrane in the liquid buffer so that no part remains unequilibrated. And similarly, we need to have two pieces of filter paper of the same dimension as of the gel. They should be soaked in the transfer buffer again. Then this is the time to assemble the blotting setup. That blotting cassette is taken up and open it like a book, placing sponges on both the sides. We are going to follow a specific sequence of the arrangement. The first time comes the filter paper, which is already soaked in the transfer buffer. This filter paper will be rolled up by the pipette. This rolling is mandatory to remove any air bubble. Then we are going to place the nylon membrane over that filter paper. Again, a removal of air bubble is important. Then equilibrated gel is placed over the nylon membrane. Removal of bubble is again performed by rolling the pipette over the gel very gently because extra pushing or hard pushing can damage the gel. Lastly, there comes the blotting paper over the gel. So blotting paper, nylon membrane, जेल, ब्लॉटिंग पेपर, इस साइड पे भी एक हमारे पास स्पंज आएगा और दूसरी साइड पे भी स्पंज आएगा. देन वी आर गोइंग टू क्लोज द कैसेट एंड वी आर गोइंग टू लॉक दिस कैसेट. सो दिस स्लाइड शोज यू अ समरी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन टू प्लेस व्हाट एज डिस्कस्ड. नाउ शिफ्ट दिस blotting cassette in the blotting chamber and do the electroblotting for 30 minutes at 20 volts. इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर एक्सेसिव हीट जनरेट होती है then we may need the ice box or we can place our electroblotting chamber in the fridge while the power supply should be out of the fridge. Once the transfer is complete, we need to dismantle the apparatus. The filter papers are no more required. The gel is no more required. Now the most important part or the component is the nylon membrane,
which we are going to use for blotting or for hybridization with antibody.